الزام لگا رہے ہیں تو اس کو آپ پارٹی تو بنائیں. ہو سکتا ہے وہ آ کر کے مان لے, ہو سکتا ہے آ کر کے کہے نہیں یہ بات غلط ہے اور اپنا کوئی موقف پیش کرنا چاہے, ہمیں نہیں پتا, مگر ہم مفروضوں میں تو نہیں کیس چلائیں گے. یا تو پھر اب یہ الزام ہی نہ لگائیں, یا پھر کوئی اور بات کریں کہ اب میں آئینی بات کرنا چاہتا ہوں, پھر یہ الزامات کو ایک طرف رکھ دیں. بات آئینی ہی ہوگی اس لحاظ سے, پھر ہم ان کا نام نہیں سنیں گے. سر گزارش ہم نے جب موقف لیا کہ ہمارے پر اب بات دیکھیں نا, میں نہیں, اب پھر میں وضاحت کر دوں. اب سول کورٹ ہے, اب جہاں تک ہماری تقریر, ایک سیکنڈ ٹھہریے نا. دیکھیے نا, اگر کسی پہ کوئی بھی الزام لگتا ہے, اب یقیناً عدالت بھری ہوئی ہے, صحافی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو تو منع نہیں کر سکتے کیا لکھیں کیا نہ لکھیں. آپ نے جو نام لیے یقیناً کل اخبار کی زینت بن جائیں گی, بنیں گی یا نہیں بنیں گی؟ جی جی, تو ان کا موقف یہ ہے لے بھی نہیں. صرف مجھے آپ باقی باتیں چھوڑ دیجیے, ہمیں ڈیو پروسیس کی جب بات کرتے ہیں تو پھر ان کا موقف یہ بغیر ہم آگے بڑھ, یا تو یہ الزام نہ لگائیں, ٹھیک ہے آپ کیس چلائیں. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں میں فیکٹس پہ نہیں جاؤں گا, میں قانونی دلائل دوں گا یا آئینی دلائل دوں گا, وہ ایک الگ ہوتا ہے. جہاں کسی نے کسی کی بات کی, ہم نے کہا آپ نے پارٹی بنایا, جی ہاں, پھر وہ جواب دینا چاہے نہ دینا چاہے کیا کرے, وہ ایک الگ بات ہے. اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس شخص کو آپ پارٹی کو نہیں بنا رہے, یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا ہے. دیکھیے میں گزارش کروں, آپ نہیں بنانا چاہتے, یہ معاملے نہیں, میں پوچھ رہا ہوں, نہیں بنانا چاہتے ہیں. جی نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کی کیا بات ہے سر, آپ سنیں گے نہیں, گزارش دیکھیے ہم آپ کو نہیں سنیں گے. میں لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے نہیں, ہمیں نہیں پتا یہ ہوا کیا. نہیں ہوا کچھ نہیں ہے. دیکھیے ایک بات ہوتی ہے, سب کو پتا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, مگر جب آپ عدالت میں آ جاتے ہیں تو اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں. اکثر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, واچ کر رہے ہوتے ہیں بریف پہ, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ وہ آیا دیکھنے کے لیے. اور جب تک اس کو نوٹس نہیں ہوتی ہے نا, اس کا ہونا موجود ہونا کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے. یا ہم سے بہتر آپ ہمیں روزانہ یہی بتاتے ہیں I was condemned unheard. سپوز ہم کل کو کوئی فیصلہ کر بیٹھے اس پہ اور ان صاحب کے متعلق کچھ کہہ دیں, تو کیا پہلی بات کہے گا I was condemned unheard. اتنی بڑی عدالت نے مجھے سننا گوارا ہی نہیں سمجھا. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ایک اور کیس بھی چلا تھا, کچھ الزامات لگا رہے تھے لوگ میڈیا میں. ہم نے کہا آپ آنا چاہتے ہیں تو آ کے عدالت میں بات کیجئے, ایسے نہیں چلے گی. آپ باہر تقریریں کر رہے ہیں اور ہمارے سامنے آئیں نہیں, اور پھر وہاں کہہ رہے ہیں اگر مجھے عدالت بلائے, بھائی ہم کیوں بلائیں گے, جس کو آنا ہے خود آئے. اگر آپ الزام لگانا چاہتے ہیں ہم آپ کو روک تو نہیں رہے, مگر آپ پھر طریقے سے چلیے نا, پھر آپ ان کو پارٹی بنائیں. یا تو یہ بتا دیں کہ اگر ہم خان صاحب یا تو یہ بتا دیں کہ جو آپ نے ایلیگیشن لگائی کسی فورم پہ یا کسی ذریعے پہ, جس شخص پہ آپ نے الزام لگائی, انہوں نے رپلائی دی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب آپ کو اس فورم نے آپ کے خلاف پروسیڈنگس شروع کی, اس فورم نے ان کو کوئی نوٹس دیا کہ آپ کے خلاف یہ ایلیگیشن ہے, جواب دیں. انہوں نے اس کو پارٹی بنایا یا نہیں؟ جی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. فورم کیا تھا, سپریم جوڈیشل کاؤنسل. ہوا کیا, اس تقریر میں کہیں کسی کا نام نہیں لیا گیا, صرف ISI کو جنرل. آپ خود کہہ رہے ہیں کہ شوکت نوٹس میں نے 2 لوگوں کا نام لیا. جواب میں بات میں پوری سن لیجیے. جی جی, جب شوکت نوٹس ملا, پہلے وہ دکھائیے اپنا جواب, پہ دیکھیں, ہم دیکھ لیں آپ کا کدھر ہے جواب. عامر خان صاحب آپ کے جواب کے اندر 3 لوگوں کا نام کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے. ان کے جو جواب انہوں نے جو آپ نے جو رپلائی کیا ہے نا, رپلائی کون سے پیج پہ ہے؟ 83. 2 ہیں. پہلا رپلائی ہے, پریلیمنری رپلائی ہے 83 پیج آنورڈ, اور دوسرا رپلائی ہے 223 پیج پر. نام اس میں ہم نے لیے ہیں. جی ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے 3 لوگوں کا نام لیا ہے. جی بالکل نام لیے ہیں. یہ 27/8/2018 کو جو پیج بتائیے, جی صفحہ بتائیے. 223 ہے, یہ سیکنڈ میں آئے گا, پیج 223. فرسٹ رپلائی میں آپ نے نام نہیں دیا. جی نہیں تھا, چلے وہ پیج 223. یہ جو پیپر بک 2 ہے اس میں
223 जनाब देखिएगा, ये पार्ट 2 है जी 223 एडिट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, और इसमें जो स्पेसिफिकली ठीक है, सही है। पेज 229 में आपने किसी का नाम लिया है इसमें या नहीं लिया है? जी पैरा 16 देखिएगा पेज 228 पर, 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है पेज 228 पर। देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को बुरा करते हैं। नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ, ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, वकील की बात कर रहा हूँ। ये आप हर चीज़ पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं, ये तो नहीं कहेंगे। अदलिया से मुताल्लिक तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, जैसे वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक ये ना हम चलाते हैं। तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बनाने का नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी, और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, इसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया में नहीं आता, उसके अगेंस्ट पे आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी, अब देखिए आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो ही टोल्ड, ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट क्राई, देन डोंट कंप्लेन। If you don't want to join a party against whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, face your accuser, भाई face your accuser और you accuse him, face him, face to face। सर उसी को तो एक्सप्लेन करने को नहीं करेंगे आप। नहीं सर, पहले बात तो सुन नहीं आपका कम देखिए बुनियादी को पूरी तरह देखिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद मैं देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं। भाई आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ये बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं जी, बनाने को हम तैयार नहीं, या हम पे एहसान ना कीजिए, आपका केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो अगर आप पर डिपेंड कर, हमने एक पॉइंट रेज के आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये
मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको देखिए आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छे शख्सियात होते हैं। वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, पुराना मानिए, बुरे भी होते हैं। हर शोबे में ये ज़िंदगी के यही है। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना तो फिर नहीं, बिल्कुल यही का नाम हम क्यों देते देखिए नहीं, सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूँगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें। मैं हमने मुंह पे करनी थी तो नहीं बात हुई। पहले थोड़ा सा फैक्ट सुन दीजिए। मैं समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आपका कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपका कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दूं, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा। अभी आप सुन तो लीजिए ना, ठीक है। अब इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही हैं, वो बात तो गुजर गई ना। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म हो गई ना, खत्म हो गई है ना, कार्रवाई कर ली, आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते। जब जरा आप सुन तो लेना पूरी, खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने की, तो उन्होंने गलती कर ली। अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐप थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के, तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन। चलिए आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं, मगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना कि उनका मौके तो हम सुन लें ना, या उनको बस हम कंडेम कर दें कि बस जी देखो तुमने ये सब कुछ किया। हमें कैसे पता, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना, वो शायद आके आपकी बात की तस्दीक कर ले कि जी बिल्कुल हम ये कर रहा था। ठीक है, अगर आप मैं करूँगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है। एब्सोल्युटली, हम तो चाहते ये थे, घबराहट है, हम तो चाहते ये थे कि आप करें ना, बुलाएं अदालत में, आप करिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। आप नहीं कर रहे, वो गुजर गया, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, ठीक, आई एम विलिंग टू, नहीं विलिंग नहीं, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट। नहीं, आई एम मेकिंग, आप पे कर रहे हैं जैसे हम केस चला रहे हैं आपका। आई हैव ग्रोन वाइजर एंड आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। नहीं, इन्होंने बनाए, बाकी लोगों ने, सलाउद्दीन साहब ने और हाँ। Have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. Hello. Yeah, but do you agree with this or not? I think they should be parties. The gentleman name should be parties. If you are making an allegation against somebody, whether we accept, not at least, that will come later. Let's hear him. Let him issue a notice at least. Yes, sir. Yes. Or not? Huh? आपने जो respondent number 5 ISI का पार्टी बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई है वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायन किया है, अपने चीफ जस्टिस को, आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पर लगाइए। क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ is a respondent. We will take Justice Anwar Kansi as a party because he becomes a respondent in this case, and हमारी contention ये थी कि अगर he has given a different version to my version, let him be summoned as a witness and I'll cross on him. खान साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया, वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, तो कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत बिल्कुल ठीक, अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, अगर देखिए अगर हम लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज़ फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे, भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहाँ तक जाती है बात। So I'm making a request that ठीक है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आ करके आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। बस सीधी बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है।
ویسے ان کی طرف سے جو ایکس چیف جسٹس تھے ان کی طرف سے تو رپلائی آ چکا تھا, انہوں نے آپ کی ساری باتوں کو ڈینائی کر. ہاں لیکن ہمیں موقع نہیں دیا گیا اس کو ریکارڈ کرنے کا. اچھا نہیں, مگر دیکھیں آپ مجھے لگ رہا ہے کچھ آپ یہ بھی کچھ نہیں سر, وہ صرف ایک فیکٹ جو ہے میں جناب کو اس میں ہمیں ہیئرنگ ملی نہیں. ہوا یہ کہ ہم نے جواب داخل کر دیا. جواب داخل کرنے کے بعد اس دوران ہم نے ایک درخواست دی کہ اول تو ان دا فرسٹ پلیس ایڈریسنگ اے بار ایسوسیشن از نو مس کنڈکٹ, بٹ ان کیس میرٹ کی بات ہے, تو میرٹ کی بات ہے, میرٹ پہ بعد میں آئیں گے. جی عرض کر رہا ہوں, نہیں یہ بات اصل میں اس سے میں کہنا چاہتا تھا, میں نے کہا تھا اگر جناب پروسیڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک تو یہ انکوائری اوپن ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دا ججمنٹ وی آبٹین ان 2018. کون سی انکوائری؟ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے انکوائری کرنی تھی نا. اس کے بعد آفٹر شو کاز نوٹس نیکسٹ اسٹیپ از reply receiving is inquiry in case the SJC wants to continue. نہیں اوپن کا کیا مطلب؟ Open means in the open court. نہیں مگر وہ میں آپ سے ایک حد تک اتفاق بھی کرتا ہوں, مگر اس کے جو پروسیجر بنا ہے اس میں کچھ کیمرہ پروسیڈنگز کا تذکرہ ہے اس میں جو کہ میں نے ذاتی طور پہ اس کے خلاف ہوں. جی جی میں تو چاہتا تھا اوپن چیزیں ہوں, لوگوں کو پتہ چلے. یا تو پر ایک دو طریقے ہوتے ہیں نا, یا تو الزام کا کسی کو پتہ ہی نہیں وہ خفیہ سے چل رہا ہے, مگر جب الزام لگے تو پھر یہ باتیں اوپن ہونا چاہیے. سر اس کو پھر ہم نے چیلنج کیا تھا in another case. This is PRD 2018 Supreme Court 538. اس پر 5 judges bench نے یہ فیصلہ, کیونکہ in an earlier matter I made an application that let this cases be heard in the open court. اس کو ریجیکٹ کیا تھا Supreme Judicial Council نے. We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, a report was submitted to the president and president removed me. So the main case hinges on this question whether any person. یہ کتنے دن چلا یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے پاس معاملہ؟ ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور وہ ان کیمرہ میں ہوئی تھی. نہیں آپ تھے اس میں؟ جی جی I was his counsel there. انہوں نے کوئی وٹنس پیش کیے؟ کوئی وٹنس نہیں, nothing. نہیں کہ یہ اس بات کی تصدیق کریں کہ یہ واقعی آپ کا بیان ہے, کس نے سنا, کیا ہوا؟ جی جی بالکل. کوئی گواہ نہیں تھا؟ ایک ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی. آپ نے کوئی گواہ پیش کیا یا آپ کو موقع نہیں ملا؟ نہیں, ابھی تو کوشچن تھا انکوائری ہونی ہے کہ نہیں. یہ تو پریلیمنری ہیئرنگ تھی کہ whether you want to proceed with inquiry or not. On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold inquiry تو پھر let that be in the open court. آپ کی تقریر کا ایک پورشن تھا جس میں آپ نے کہا کہ میں اوتھ پہ بات کرتا ہوں. یہ بات آپ نے اوتھ پہ کہی کہ جو ایلیگیشن آپ لگا رہے ہیں. جی جی جی. کیا اس اوتھ کا رپلائی ڈائریکٹلی یا تھرو اوتھ آیا کسی کی طرف سے؟ نہیں اس کا چاہیے تھا. انکوائری نہیں نا ہوئی. مسئلہ کیا ہوا, کیس یہ ہے کہ ایک شو کاز نوٹس ہمیں دیا گیا, ہم نے اس کی 2 ریپلائیز, پریلیمنری ریپلائی دی اینڈ سیکنڈ ریپلائی دی. پروسیجر کیا ذرا ہمیں بتا دیں کہ کیا پروسیجر کیا ہونا چاہیے اگر اس طرح کے معاملہ؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ریپلائیز ہیو بین سبمٹڈ then the Supreme Judicial Council on the basis of reply received decides whether or not to proceed further under the 2005 rules that have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But
actually in this very judgment 2018 they have regarded as rules. I had actually challenged these on this ground that they are not even rules. But then proceedings क्या होनी है, डिटेल बताने क्या प्रोसीडिंग होनी है. फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है. हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है. स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब. आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गलत किया. जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेंगे मुझे भी तो सुन लेते. तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहाँ आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं. ये देखिए ठीक है, बहुत बुनियादी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है. अब आप मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी. मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए. ऐसा क्या होगा? आप पूछ लें उनसे, अगर आप पूछना चाहते हैं. बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी हाँ नहीं जनरल बात आप बात करें उधर जनरल बात हो रही है. लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही. देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है. आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए. यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए दो तरीके हो सकते हैं ना. तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की. अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू. पहली बात, आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन कोई तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो तो एक अलग कानूनी बहस है. ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं. अभी सवाल कुछ और है. अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं. कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं. तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना जी. तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें. तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू वॉर नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे. इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हैं मैं की बातों में वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की. आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं. हम अगर कोई डिसीजन देंगे इन्फ्लुएंस होगी और अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हम इस पर से इन्फ्लुएंस होकर करेंगे आपके फेवर में. अगर नहीं होगा तो अलग बात है. तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड द मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस. ठीक, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ. सपोज हम आप ये ना समझे, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है. वही शख्स जिनके खिलाफ अपने एलिगेशन लगाए, कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, तो हम बदनाम हो जाएंगे. वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं. एप्लीकेशन फॉर मेकिंग अ पार्टी. तो आप अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया. इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं. फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए. I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was included by name. No, but rightfully so. The head of the organization was it क्या कहते हैं? Discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. ये आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी बनाएंगे? हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है,
So you don't make the institution a party, you will make the allegation against him. Lawyers will come forward and say, this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in the branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly. Or don't say a word against them. This is your call. Petitions I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations. We'll do it within 14 days. कितना टाइम लगेगा पार्टी बनाने? हमसे तो आप कह रहे थे आज कर देंगे, कल कर देते केस को. Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना. छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली. देखिए अब अगली हियरिंग में बस एक ही काम होगा. जी हम उनको फिर नोटिस करेंगे. अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं. We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है. Otherwise, if your lordship would entertain, जनवरी में रख लेते हैं. आप आराम से कर लें. कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब. नहीं सर, नहीं कैन डू इट. नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें. 3rd week of January मालूम करना है. देखिए खान साहब, let me rephrase it. This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. We understand. See, if you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So you think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word. And you think about it, so we can fix it. I'm requesting that. I'm requesting. अब ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट. ये भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस. रजिस्ट्रार कैन डू सो. नहीं, देखिए अभी आप देखिए, इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना. देखिए फिर आपको भी या तो विड्रॉ करें सारे एलिगेशन के खिलाफ, फिर चलाएं. तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए, आप आई टेल यू वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If you lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's a holiday, vacation stuff. It's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. नहीं, tomorrow is the last working day.
Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th, 31st, the 2 weeks vacations. अगर on 18th I'm at Quetta, so can't be here. And I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacation, the other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we can take up. We will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the No, you want to think about it, or you tell tomorrow? tomorrow. Kal na kahega, I want to think about it. But then that is already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. इसमें लिखिए. Mr. Three petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other two by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Mr. Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either such allegations, either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया, सोचेंगे. I'm making requests for that. At this stage, Learned Council, Learned Senior Council stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmed, who represents the petitioners and the other 2 petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूं? तो वो जो इदारा है उस पे फिर बाद में Federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll act. I'll tell you what difficulty you will face.
To the ministry, yes, sir. वो okay, क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30 because my lord is also here. There's another bench. Is 11. ठीक है. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, or can I appear tomorrow through video link? No, as long as your application can't be through video link. No, my application will be on But primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes, sir. You have to give reasons therein as well. ठीक है. चलिए तो कल tomorrow at 10:30. 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi.